or Uzair. Retinopathy is a disorder of the retinal vessels that eventually develops to some degree in nearly all the patients with long-standing diabetes mellitus, contributes 4.8% of the 35 million cases of blindness throughout the world. Most common cause of bilateral severe visual loss in working age group in US. A recent study in urban population in South India estimates the prevalence of diabetes mellitus in adult population as high as 28% and the prevalence of DR in diabetic retinopathy in diabetes to 18%. वेरी गुड। अच्छा, इस पूरी स्लाइड में जो काम की चीज है ना, आपने वो याद रखनी है सामने। ठीक है अली, आवाज आ रही है आपको? दीदी आ रही है जी आवाज? सर, आ रही है। जी सर। और बाकी सब लोग भी। काम की चीज ये है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज मेलाइटिस के केसेस में होती है, और रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज it occurs in every person after 10 years of the diagnosis of the diabetes. Okay? Okay, sir. चाहे वो सिर्फ एक माइक्रो एन्यूरिज्म ही क्यों ना हो, माइक्रो एन्यूरिज्म इज द फर्स्ट साइन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। 10 years के तक हो सकता है उसको ना हो, उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन 10 years जब उसको हो जाते हैं having diabetes, then 90% of the people start developing any sort of diabetic retinopathy। ठीक है जी, बाकी स्टैटिस्टिक्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है Okay. जी। स्कूल Risk factors: age at the diagnosis of diabetes, duration, poor control of diabetes, pregnancy, hypertension, nephropathy, hyperlipidemia, obesity, anemia, smoking and cataract surgery. very good। Okay, now can you see me clearly? Can you hear me clearly? Yes, sir, you are audible. Okay, you are also audible, but your voice is very low. I don't know why. Sir, maybe laptop की वजह से. You need to remember the risk factors. These are written in your book Shafi Jitoi, and the importance of risk factors is that they can, if controlled, only slower the progression of the disease, and if not controlled, they can aggravate the disease. This is the effect of risk factors. ऐसा नहीं है कि if they are avoided, diabetic retinopathy will not appear. Okay? Okay, sir. Sir, kindly add students. हाँ, ये मुझे बताते रहा करें क्योंकि मैं। Yes, sir. अच्छा, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, जहाँ पे इंटरनेट का इशू है, तो कैन यू काइंडली रिकॉर्ड दिस वीडियो? और अली, अली कैन यू रिकॉर्ड द वीडियो? सर मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, this is a very busy slide, and it contains a lot of stuff and lot of conception, and it needs to be understood very clearly. तो इसको आहिस्ता आहिस्ता, अभी सेशन भी खत्म होने वाला है, इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कौन सी है ना, रेटिना के अंदर मोस्ट कॉमन डिजीज है, इसको आपको समझना है। तो जरा ऊंचा ऊंचा पढ़े, समझने की कोशिश करें, अंदर मैं फिर आपको साथ कोलैबोरेट करूंगा। ओके, स्टार्ट। क्या नाम है आपका? स्टार्ट रीडिंग। Hyperglycemia leads to intracellular sorbitol आहिस्ता आहिस्ता accumulation. देखिए, ये पैथोजेनेसिस है। एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक जुमला याद रखें, ठीक है साहब? डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ डिजीज ऑफ medium and small size blood vessels. It usually spares the large size blood vessels usually, and it is a microangiopathy.
Okay. Now, Okay, sir. keeping this in mind, start reading very slowly because it is the conceptual slide. Okay. Okay, sir. Pathogenesis. Hyperglycemia leads to intracellular sorbitol accumulation, free radicals, glycosylated end products, disruption of the ion channel functions, protein kinase C ऊंचा activation. ऊंचा सर स्टार्ट से रीड करना स्टार्ट करूं? स्टार्ट से करते ऊंचा बोले जरा। अच्छा, जो हाइपर सब लोग जिनको समझ नहीं आ रही, एक मिनट रुके आप से करें पढ़ना स्लाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। सब सुने, मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा एंड पे। हाँ जी। Pathogenesis. Hyperglycemia leads to intracellular accumulation of sorbitol, free radicals, glycosylated end products, disruption of the ion channel functions, and protein kinase C activation. That in turn leads to three effects: direct effect on the retinal cell, microangiopathy, damage to the capillary cell wall that leads to intraretinal hemorrhage, edema exudate, and microvascular occlusion ischemia. Thirdly, it leads to hematological. सर वो हट गया है hematological वाला। अभी आ रहा है? नहीं नहीं सर वो नहीं है visible। क्या नजर आ रहा है? सर ये माइक्रो ऑक्लूजन नजर आ रहा है। उसके नीचे नहीं आ रहा कुछ? नहीं सर उसके ऊपर था सर वो। ये अब आ रहा है ऊपर वाला नजर? सर ये जो माइक्रो जी सर अब विजिबल है सर। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कर्सर को मूव करते हैं ताकि प्रॉपर्ली विजिबल हो। ये ले, अब फिर ठीक हट है? गया सर, फिर हट गया। अब ठीक है? नहीं सर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ। ये है सर माइक्रोवेस्कुलर, तक पढ़ लिया था ना आपने? जी माइक्रोवेस्कुलर एक्लूजन हो जाती है। अच्छा, नो इट्स ओके। जी सर। नो इट्स ओके। जी सर इट्स ओके। असल में बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग मोबाइल में है ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो रहा हो इसको पढ़ने में। चले आप पढ़े। Thirdly, the protein kinase deactivation leads to hematological and rheological changes that leads to microocclusion ischemia, IRMA that leads to hemorrhage, and neovascular fibrosis that leads to traction. अच्छा देखें, इसमें जो ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऊपर हो रहे हैं ना, ये जो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, you all know that if glucose is in excess, then it converts into sorbitol. Yes or no? Yes, sir. And free radicals are produced. Ultimately, uh, it can directly affect on the retinal cells, or it can affect the damage. It can damage to the capillary walls. How it damages the capillary walls? Each endothelial cell of the capillary is supported by a supporting cell called pericyte. So each endothelial cell has one supporting cell, one pericyte. It damages the pericytes. Okay? Okay, sir. अली साहब आप भी बोले कुछ? जी सर। समझ आ रही है? जी सर आ रही है समझ। निदा समझ आ रही है? Yes, sir. निदा? Yes, sir. Are yes, समझ. So as a consequence of damage to the small blood vessels, what will be the consequences? There will be exudation from the small blood vessels. This is the key line. The blood retinal barrier is broken. Okay? School? जी सर जी जी। Blood retinal barrier is broken. When blood retinal barrier is broken, the constituents of the blood, whatever they are,
they will be released in all the 10 layers of the retina. That's why they cause intraretinal hemorrhages, retinal edema, or exudates, and as a result of this, there will be microvascular occlusion, and microvascular occlusion will lead to ischemia, and ischemia will lead to IRMA. IRMA stands for intraretinal micro abnormalities. These are not new vessels, and ischemia will also lead to new vessels because of ischemia. What chemicals are produced which lead to new vascularization? Anybody? Endothelial vascular growth factors. Yes, angiogenic factors these होते हैं which Excuse me, cause sir, तलहा को ऐड कर लें please. ischemia then leads to new vessels not only at the retina, on the disc, which is called NVDs, new vessels at disc, but anywhere on the retina, which we called NVEs, that is new vessels elsewhere. And they also cause the new vessels on the iris, which is called rubiosis iridis, and it leads to the rubiotic glaucoma. Okay? Okay, sir. किसी को समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करें, क्योंकि ये बेसिक स्लाइड है जो आगे हमने पढ़ना है. चले, अली पढ़े आप. Sir, angiogenic stimulators, vascular endothelial growth factor, a platelet-derived growth factor, hepatocyte growth factor है इसमें. उसके बाद एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें एंडोस्टैटिन, एंजियोस्टैटिन, पिगमेंट एपिथेलियम ड्राइव फैक्टर्स. ठीक है, इसमें वही बात जो हमने पहले की थी. बेसिकली ये ischemia is the stimulator which stimulates the production of many types of angiogenic factors. Okay? Is everybody getting me? Hijab? Nida? Yes, sir. Yes, sir. Now we come to the classification. तो निदा, आपने इसमें मानूर में पता के माइक का कोई इशू है. Nida, are you logged in from the laptop? Yes, sir. So please start reading. According to This is class. Kansky's 7th edition, 2011, background diabetic retinopathy, diabetic maculopathy, proliferative diabetic retinopathy, advanced diabetic eye disease. Most detailed classification was given by ETDRS study. Okay. Since the discovery of diabetic retinopathy, it has been conventionally classified as written here: background, pre-proliferative, and proliferative. But a study was conducted later on, which is called ETDRS, and on the basis of this study, another classification was introduced, which was classified into non-proliferative diabetic retinopathy and proliferative diabetic retinopathy. Only these two categories were introduced, and then the further sub classification of each of the non-proliferative and proliferative stage was introduced. But at your level, if you remember the basic classification, that is, I think, enough. But in your book, Chepujitoi,
ETDRS classification is also given. We will discuss here only the conventional. Okay. Yeah, I want you to see this. These are the normal capillaries. Soon, can you see? Yes, sir. Hopefully, all the class is able to see. If someone has got some problem, please raise your hand or let me know, because I am sharing the screen, so I may not be able to see your raised hand. These are the normal capillaries on the left side, and on the right side there is loss of the pericytes, and you can see the blood